A writer only begins a book, but a reader finishes it by Samuel Johnson. Good afternoon to all. Respected Principal Mr. Sunil Patrick Sir, and my dear teachers, the book review program is organized for the members of the Teachers Reading Club. Today, to increase love for reading and to lead the teaching fraternity with self example. We must continuously strive to promote the belief in reading and have great desire to acquire knowledge. Today, we have three teachers to propose the critical thinking among the readers. For English, Mrs. J. For Kannada, Mrs. Mamta. And for Hindi, Mrs. Ambika Devi. A warm good afternoon to all. Respected Principal, Mr. Sunil Patrick Sir, and all my dear colleagues. As we all know, we have started with a new venture to enhance our skills and knowledge, that is, the Teachers Reading Club, which was inaugurated on 13th of December 2021. As a part of it, the first book we had chosen to read was The Warriors of Enmakkaji. I hope you all had read the book, and today I am here before you to give a review on the book The Warriors of Enmakkaji. At first, I would like to give a brief introduction about the authors of the book. The authors of the book The Warriors of Enmakkaji are Reverend Father Vipin Baby Barilil and Sister Marina Matthew. Reverend Father Vipin and Sister Marina have been closely associated to Navajivana, which is a missionary organization with a motto of helping the children who are affected by the endosulfan tragedy. The Norbertine Order and the Sisters of the Franciscan Clarist Congregation run this House of Mercy. There are about 17 editions of the book and is translated to English, Kannada and Tamil. We are very proud that the English translation of the same is done by our former principal, Joseph Sir. The piece of literature that is used in the book takes us to the world of Enmakkaji and thus experience the reality of Enmakkaji. Now, let's have a glance through the central idea of the book. The book, The Warriors of Enmakkaji, a piece of literature which is based on the real incident of endosulfan tragedy that occurred in a small village called Enmakkaji. The story evolves around the life of Enmakkaji, which is literally known as Swarga, the land of 8 goddesses, a village in the northern district of Kerala, a place of hills and forests, the land of 7 intermingling languages, and the land that gave birth to 20 tribal communities. During 1962, PCK, that is, Plantation Corporation of Kerala, descended on this land. They cleared 5,000 hectares of land and planted cashew saplings. In order to get a good yield of cashew, they promoted the usage of endosulfan. During the year 1978, they started to spray the endosulfan pesticide aerially through helicopters. It was not for few minutes or hours that they were engaged in this dangerous mission, but all of 23 years. The aerial spraying of endosulfan for many long years caused mass death of bees, fishes, birds, and deformities in animals and humans. There were rising incidents of mental illness and deformities among children and adults. Enmakkaji became the land of sufferings and pain. The people made protest against the government. A committee was formed
and they undertook many researches on the aftermath of the endosulfan usage. And the reports forced the government to prohibit the endosulfan pesticide. But the after effect of the usage was terrible. The children were the main victims, and this gave birth to Navajivana, a mission initiated by the Nobitine Order and the Sisters of Franciscan Clarist Congregation. They undertook extensive journey across Kasaragod and collected information, visited houses, and what they saw and realized was heart-rending. The older generation and the little children were stricken with cerebral palsy, impaired brains, distorted limbs, and so on. They decided to help them. They started the school for the children, but it was not an easy venture. They had to face a lot of challenges, but now the dream of Navajivana came to reality. Since 4 years, it has been truly turned to be the heartbeat of Enmakaje and a place of refuge of hundreds of innocent victims. The book also depicts the life of many children. Udayan, the first inmate of Navajivana, Lubina Moore, who hardly could stand up on her feet, and blind Kalandar, who was closed at his room as if in a cage, but now roams the freedom of Navajivana. The book also depicts the words of gratitude of mothers of the children in Navajivana, and this made me very emotional. Their love and sacrifice towards their children are admirable. Through this book, the authors, Reverend Father Bipin and Sister Marina, have tried to focus attention on 4 facets. They are endosulfan, Enmakaje, Navajivana, and rebuilding the lives and livelihood of the people of that region. As we go through the book, the cover page, at the top, we find the image of cashew fruits with abnormal proportion. This image tries to convey the message that everything in the nature has a proportionality, which if altered makes it look hideous and hence useless and repulsive. And at the bottom of the page is a seed sprouting with its healthy leaves, which refers to the nature without any deformities. I personally felt that each reader who reads the book will end up with tears. The book will continue to haunt us for a long time because the stories of each child are very painful. I would like to say that they are the real warriors who are extraordinarily strong and committed to face the challenges of their lives. In my opinion, all the struggles and sufferings were caused because of the mere irresponsibility of some authorities. But at the same time, there are some good men around them, the fathers, nuns, and the teachers of Navajivana, who are rendering their selfless service, and this makes us realize that there are representatives of God on earth. Dear teachers, I found a quote that really penetrated into my heart and made me thoughtful. It's, "How do we sleep when there is so much of anguish and agony all around us?" I repeat, how do we sleep when there is so much of anguish and agony all around us? I believe this is the thought of each good soul of Navajivana who are rendering their heart and soul to the little children of Enmakaje. There are many sufferings, tragedies and struggles caused in our society which remains unnoticed. If each individual join our hands to help the needy
justice and bring harmony and equality in the society, I wonder the world would seem to be a heaven. I request you to please meditate towards the same and share your thoughts. Before concluding, I would like to put forth a question before you. What is the message that the authors want to convey through this book, The Warriors of Enmakache? I leave this question for an open discussion and I request you to share your opinions. Thank you. सभी को इस अपराह्न में मेरा अभिनंदन नमन। आज हम एक नया कार्यक्रम को सूत्रपात कर रहे हैं कि शिक्षकों में पढ़ने की रुचि बढ़ाना। इस कार्यक्रम में हम चयन किए हुए पहला किताब है निर्दोषी पीड़ितों के व्यथा कथा एन्मकाचे। भगवान अपनी श्रद्धा से रचित राज्य यानी भगवान का खास राज्य है दक्षिण भारत का केरल। प्रकृति रमणीय राज्य शैक्षणिक क्षेत्र में देश में ही आगे ही रहा है। ऐसा राज्य में एक समुदाय मौजूद है जिनमें मानव विकास के इतिहास में एक अविस्मरणीय स्थान पाया है। कुछ लालची और धनधाई लोगों के लाभ के लिए अतृप्त इच्छा से प्रेरित होकर बिना सोचे समझे आबादी के जीवन को तबाह कर दिया। अंतिम परिणाम यह है कि वे अब अनकहे और अकथनीय दुखों के चुंगल में उलझे हुए जीवन और मुड़े हुए अंगों के साथ रह गए हैं। एन्मकाचे तब से केरल के साहित्य के पन्नों में इस दुर्बल समुदाय के दुख का पर्याय बन गया है। त्वरित लाभ कमाने के लिए दुखों की बारिश की एन्मकाचे यह भूमि है जो जीवित रहने के लिए अपनी लड़ाई में मारे गए कई लोगों की स्मृति को जन्म देती है और जो अभी भी जीवन की एक झलक के रूप में गुजरने के लिए बहादुरी से संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ एंडोसल्फान एक समुदाय और एक पीढ़ी को ही पीछे छोड़ गया है। मैं इस किताब के बारे में बोलने से पहले इस किताब के सूत्रधारी यानी लेखक बेबी वायलिन सिस्टर मरीना मैथ्यू को आभार व्यक्त करती हूँ। इस किताब के मुख्य अंश है एंडोसल्फान 1955 में विकसित एक कीटनाशक है। 1980 और 1990 के दशक में लोगों ने बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल खेती में किया। केरल के कासरगोड जिले में काजू के बागानों में एंडोसल्फान को कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल किया था। केरल के अन्य क्षेत्रों में यानी पालक्काड़ के मुत्तरमाड़ा पंचायत में भी चाय के बागानों, धान और फलों के बागों में भी इस कीटनाशक का उपयोग हवाई छिड़काव या मैनुअल पंप के माध्यम से किया जाता है। लंबी दूरी के वायुमंडलीय परिवहन के लिए इस क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों में गंभीर स्वास्थ्य विकारों से जुड़ा एंडोसल्फान 2001 में कासरगोड के पादरे गांव में सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा किए गए परीक्षणों ने कीटनाशक के घातक प्रभावों को दर्शाया। कुछ प्रदेशों में एंडोसल्फान छिड़काव 1976 की शुरुआत में शुरू हुआ था। कुछ साल बाद वहां बछड़ों के विकृत अंगों के साथ पैदा होने की खबरें थी। इन क्षेत्रों में मेढक, मछलियां, मधुमक्खी, बंदरों, सरीसृपों और हजारों तितलियों की मौत देखी। एंडोसल्फान के परिणाम को 2014 के एक सर्वेक्षण में मुत्तरमाड़ा में 150 से अधिक एंडोसल्फान पीड़ितों की पहचान की गई और कई स्थानीय बच्चे और 25 से कम आयु के बड़ी संख्या से लोग गंभीर विकारों को अनुभव करना पड़ा। नदियों के किनारे रहने वाले परिवारों ने सबसे अधिक सहन किया। विरोध व्यक्त करने वालों ने वहां के निवासियों के साथ जुट गए। उनके प्रयासों से इन परेशानियों पर प्रकाश डालने में मदद की। हालांकि अधिकारियों के इस एंडोसल्फान के खतरों से पूरी तरह निपटने में कई साल लग गए। 2011 में POP की 7वीं बैठक ने
एंडोसल्फान के निर्माण और उपयोगियों और उपयोग पर वैश्विक प्रतिबंध लगा दिया। उसी वर्ष भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिबंध लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक पैनल ने 2 साल की अवधि में एंडोसल्फान उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की सिफारिश की, ताकि भस्म करने की सिफारिश की। केरल सरकार ने एंडोसल्फान त्रासदी के लिए 5,000 से अधिक पीड़ितों को 500 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया। इसने एंडोसल्फान के संपर्क में आने से होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए एक चिकित्सा सुविधा स्थापित करने का भी निर्देश दिया। मुझे इस किताब में से कुछ वीर योद्धाओं के चित्रण मिला है। इसे अंग्रेजी में वॉरियर्स कहा है। इसका अर्थ सैनिक भी है। यहाँ वे सैनिक किसी भी देश के साथ युद्ध नहीं करते हैं। वे एक स्वयं सेवकों के रूप में इस एंडोसल्फान से पड़े पीड़ितों की रक्षा के लिए अपनी जान बूझकर कार्य करते हैं। एंडोसल्फान के विरुद्ध लड़ते रहे योद्धाओं ने विपरीत परिस्थितियों को एक अवसर में बदल दिया और जीवन की रेगिस्तानी रेत में एक मुरझाई हुई कली के पुनर्जातन के रूप में जीने लगे। यह खंड इन शानदार अदम्य एन्मकाजे के योद्धाओं को समर्पित है। उनके लिए हर दिन एक नई लड़ाई है। वे बहादुर योद्धा है जो हर दिन के सामना उसी संयम और समभाव के साथ करते हैं। वॉरियर्स या योद्धाओं के साथ इन पीड़ितों ने जो प्यार और स्नेह मिला वह मुक्त है। शुद्ध मासूमियत, एक मुस्कान में आश्रित, एक सर्वोत्कृष्ट रूप से पारदर्शी निर्दोष मुस्कान, जिससे यह सब कह दिया आपका स्वागत है। कहते हैं लेखक, नवजीवन में एक बार एक महिला ने जाने से पहले लेखक से कहती है कि मैंने इन बच्चों से इतना एहसास कभी नहीं हुआ। कुछ तो यहाँ तक कह देते हैं कि वे अपने बच्चों के साथ जरूर लौटेंगे, क्योंकि इन बच्चों से वे बहुत कुछ सीख सकते हैं। कम से कम इन आगंतुकों को कुछ को अपने बच्चों की याद दिला दी गई होगी जो बड़े हो गए हैं या किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक विकृति के बिना समृद्धि में बड़े हुए हैं। लेखक और आगे कहते हैं कि नवजीवन की संपत्ति हमेशा मुस्कुराते हुए चेहरे हैं, जो सादगी और प्राचीन मासूमियत के चमत्कार को बेदाग और अपवित्र करते हैं। ये बच्चे सभी आगंतुकों को अपना मानते हैं। इस किताब को पढ़ते समय एंडोसल्फान से पीड़ित कुछ पात्रधारियों को आपके सामने परिचित करती हूँ। इस पीड़ितों में मुझे बहुत व्याकुल किए हुए कुछ बच्चों को आज इसका नाम मैंने बोलती हूँ। धनुश्री, पातू, जोशिमा, रायशन और रुबीना। वे सही तरह से खड़े नहीं हो सकते, फिर भी उनके उत्साह तो अविस्मरणीय है। एंडोसल्फान केवल काजू के बागानों में ही नहीं छिड़काया, कुछ मुक्त जीवों के जीवन में पीड़ा को बरसाया। आगे भी हम ऐसे प्रकृति में नाशकों को पहुंचाने वाले कृत्रिमताओं को दूर करना चाहिए। आघातकारी कीटनाशकों को मोबाइल टावरों से हमारे अनेक जीव जंतुओं को क्षीण के मार्ग में लिए है। इस धरती के लिए कौन कौन से घातक बनेगा, उसे प्रारंभ में ही रोकने के लिए हम सभी तत्पर रहना चाहिए। इस एंडोसल्फान के विरुद्ध कौन कौन से मिशनरी भाग लिए हैं? इसमें तत्वमसी, नवजीवन ऐसे अनेक मिशनरी ने काया वाचा मनसा पीड़ितों के लिए क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उनके जीवन में नव उत्साह भरने का प्रयास किए हैं। उन्हें मैं कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। साथ ही इस किताब को मलयालम से अंग्रेजी में अनुवाद करके इस पीड़ितों के लिए परोक्ष में कार्य किए हुए हमारे मान्य प्रांशुपाल जोसेफ पुट्टप्पाकिल के एक कार्य श्लाघनीय है। उन्हें मैं आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे ही हमारे मान्य प्रांशुपाल सुनील पैट्रिक, आप क्या शिक्षकों में पढ़ने के रुचि बढ़ाने का क्या काम कर रहे हैं, यह अभिनंदनीय है।
और इस संदर्भ में मैं रेवरेंड फादर सुनील, फादर बीनू, आपको भी मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। और इतने समय तक इस एनकमाचे किताब के विचार विमर्श में भाग लिए मेरे सहोद्योगियों को धन्यवाद करते मेरे बात के लिए विराम डालती हूँ। थैंक यू। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಸುನಿಲ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೇ, ನಾನು ಇಂದು ಎನ್ಮಕಾಜೆ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಎನ್ಮಕಾಜೆ ಪುಸ್ತಕದ ಲೇಖಕರಾದ ಫಾದರ್ ವಿಪಿನ್ ಬೇಬಿ ವಯಲಿನ್ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟರ್ ಮರೀನಾ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ರವರು ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾದಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗದ ಮಕ್ಕಳ ದುರಂತ ಕಥೆಯನ್ನು ಮನಮಿಡಿಯುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಾಜಮುಖಿನ ಎನ್ಮಕಾಜೆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಜೋಸೆಫ್ ಸರ್ ರವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಓದಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಎನ್ಮಕಾಜೆ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿ ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶ. ಇದನ್ನು ದೇವರ ಸ್ವಂತ ನಾಡು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಎನ್ಮಕಾಜೆ ಹಳ್ಳಿಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ದುರಾಶೆಯ ಫಲವಾಗಿ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆದಾರರಿಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಜನರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ನಾಡಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಜನರ ಬದುಕಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೇಖಕರು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲು ಉತ್ಸಾಹಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿನ ಕವರ್ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಓದುಗರಿಗೆ ಬಹಳ ಚಿಂತನೆಗೆ ಹಚ್ಚುವಂತಿದೆ. ಒಣಗಿದ ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತಿವೆ. ದೊಡ್ಡ ತಲೆ ಮತ್ತು ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳಂತೆ ಜಿಗುಟಾದ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳ ನಮ್ಕಾಜೆನಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿರುವುದನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಎನ್ಮಕಾಜೆ ಪುಸ್ತಕವು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ದೊರೆತ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಲೇಖಕರು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಮೆರೆದಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಎನ್ಮಕಾಜೆ ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಿರುವ ಜನರ ನೋವು ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಮನಮುಟ್ಟಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಎನ್ಮಕಾಜೆ ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧದ ಹಿಂಸಾಚಾರಗಳು, ಯುದ್ಧಗಳು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಆನುವಂಶಿಕ ದೋಷಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ ವಿಷವನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಎನ್ಮಕಾಜೆ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಮಹನೀಯರು, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಂಬುವ ಮೂಲಕ ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು 2000 ದಶಕದಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಎನ್ಮಕಾಜೆ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 29, 2011 ಸ್ಟಾಕ್ ಹೋಮ್ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ ಅನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಕಾನೂನು ಬಂದಿತು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎ. ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿವೆ. ಎನ್ಮಕಾಜೆಯು ಒಂದು ಪರಿಸರ, ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗೆಗೆ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪುಸ್ತಕ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಕಜರ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎನ್ಮಕಾಜೆಯು ನಮ್ಕಜಲ್ ಪಂಚಾಯತಿನ 5000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಗೋಡಂಬಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ ಎಂಬ ಮಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಎನ್ಮಕಾಜೆ ಪುಸ್ತಕವು ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕೇರಳವನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜನರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಹೋರಾಟದ ಕಹಳೆಯನ್ನು ಮೊಳಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎನ್ಮಕಾಜೆಯ ಹಿರಿಮೆ ಎಂದರೆ ಹತ್ತಿರವಳ್ಳಿ ವಜಚಲ್ಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಜನರು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಮರು ಓದುವಿಕೆಗೆ ಆಸಕ್ತರಾದದ್ದು ಪುಸ್ತಕದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಎನ್ಮಕಾಜೆ ಪುಸ್ತಕವು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಾನವರಿಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅಸದಳವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಪರಿಸರದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಲೇಖಕರು ಅನೇಕ ಮಾನವತಾವಾದಿಗಳು ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ ಉಳಿವಿಗೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಎನ್ಮಕಾಜೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಎನ್ಮಕಾಜೆಯು ಮನುಷ್ಯನ ಅಮಾನವೀಯತೆಗೆ ರಾಜಿಯಾಗದೆ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದವರ ಮಾತು ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಗುಂಡಿಗಿಂತಲೂ ಬಲವಾದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ 2 ಪಾತ್ರಗಳು ನೀಲಕಂಠ ಮತ್ತು ದೇವಯಾನಿಯರ ಪಾತ್ರ. ಎನ್ಮಕಾಜೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ತ್ರೀವಾದದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಎನ್ಮಕಾಜೆಯು ಮಾನವ ಜನಾಂಗ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಇದ್ದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಸಮಾನತೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಜನರ ಸಂಘಟನೆ, ಇದರಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಸೋಲು. ಎನ್ಮಕಾಜೆಯಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವರಣೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ವರ್ಣಿತವಾಗಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಬಶೀರನ ಬದುಕು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಗೃತಿ, ಪರಿಸರ ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಅಚಲ ನಿಲುವು ಜಾಗೃತಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಲೇಖಕರು ಬಿಂಬಿಸಿರುವುದು ಪ್ರಶಂಸನೀಯವಾದ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ನವಜೀವನದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನೇಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಂದಂತಹ ಜನರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಎನ್ಮಕಾಜೆ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಸಫಲರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಕಾದಂಬರಿಯ ಅಂತಿಮವಾದ ಫಲಿತಾಂಶವೆಂದರೆ ಈಗ ಹೇಳಲಾಗದ ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಾಗದ ದುಃಖದಿಂದ ವಿಕೃತ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಉಳಿದಿರುವ ಜನರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾದಂಥವರು ಕರುಣೆಯ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡಬೇಕು. ಎನ್ಮಕಾಜೆ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಸೇವಾ ಮಹನೀಯರ ಫಲವಾಗಿ, ಸಹಾಯಾರ್ಥವಾಗಿ, ಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ ಮಾನವರನ್ನಾಗಿ ನೋಡುವಂತಹ ಜನರು ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಎಂಡೋಸಲ್ಫನ್ ಪೀಡಿತರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡಿದರೆ ಆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಬದುಕು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆವೆಂದು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ವಂದನೆಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್. I sincerely thank and appreciate the effort of all the teachers. Now the session is open for review.